So, good morning, everybody, and welcome to Motilal Oswal's live trading session. Please give me a confirmation in the chat box if I'm clearly visible and clearly audible. So, I think we have a couple of confirmations from Mayurji, Sanjayji, and Himadri. So, thanks a lot for your confirmation, guys, and welcome once again to Motilal Oswal's live trading session. I am Parth Bhatt, and I'll be your host for the day. जैसे कि आप लोग जानते हैं मोतीलाल ओसवाल दो लाइव ट्रेडिंग सेशंस करवाते हैं दिन में। एक होता है हमारा मॉर्निंग सेशन, यानी कि ये सेशन जो चल रहा है ये स्टार्ट होता है 9:30 बजे, और ये सेशन में हम लोग आपके स्टॉक क्वेरीज कवर करते हैं। हम लोग ये कवर करते हैं कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसा लग रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देते हैं आपको स्टॉक कॉल्स, जिसमें मतलब आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विल वेट फॉर मिस शिवानी टू जॉइन अस। एज यू गाइस नो, मिस शिवानी इज नोन एज आवर निफ्टी क्वीन, और कल उन्होंने जो आफ्टरनून सेशन लिया था जिसमें हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसका उस दिन एक्सपायरी होता है, जिसमें हम लोग 0-0 कॉल्स देते हैं। So even in a difficult market with Nifty, with Shivangi ma'am's guidance, we made a quick profit of 10 points in Nifty call option yesterday. So let's wait for Miss Shivangi to join in. तब तक मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आफ्टरनून सेशन में क्या होता है। जो भी हमारे नए यूजर्स है, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे आफ्टरनून सेशन में हम लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स जिसका उस दिन एक्सपायरी होता है उस पर हम लोग 0-0 कॉल्स देते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो गिव यू BTST कॉल्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं। एंड आवर एक्सपर्ट मिस शिवानी हैज जॉइन अस, सो वेलकम शिवांगी, एंड ओवर टू यू। Thank you so much, Pat. Good morning. Good morning to all of you. And after yesterday's session, I'm sure everyone is back with a lot of stock queries क्योंकि हम काफी questions जो है कल ले नहीं पाए थे because of the Nifty expiry. But today I promise to focus mainly on stocks ताकि आपके जितने questions हो वो solve हो पाए. But let's quickly go through the index levels. कुछ 2-3 मिनट हम index के बारे में discuss कर लेते हैं, then we'll move into the stocks. So I'll just quickly share my screen as well. Okay, so we are seeing, I hope you can see my screen, right? Yeah, so we are seeing Nifty जो है पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद आज वापस वहाँ पे थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। कल ही इनफैक्ट हमने देखा कि आफ्टर अ नेगेटिव ओपनिंग इंटायर डे बुल्स वर इन एक्शन टू रिकवर, और वो ऊपर इंडेक्स को लेके गया 24,400 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है, which is quite strong. और आज के सेशन में वो इंडिकेट हो रहा है बाइंग जो इंटरेस्ट है वो इनिशियल टिक से ही देखने को मिल रहा है. सो वी विल बी गोइंग फॉर बाय ऑन डिक्लाइन, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स जो है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा बहुत वीक हो रखा था, बट आवर डोमेस्टिक मार्केट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. हम ऐसे मंथ में थे जुलाई में जहां बजट आने वाला था, और यूजुअली हम देखते हैं कि बजट जैसा इवेंट या कोई और जो इवेंट होता है जिसका बहुत इम्पैक्ट होता है, वहां इंडिया विक्स बहुत स्पाइक कर जाता है. बट इन दिस मंथ वी सीन दैट इंडिया विक्स हैज रिमेन्ड फ्लैट. कोई स्पाइक नहीं हुआ, कोई 15 के ऊपर इंडिया विक्स गया ही नहीं इस पूरे महीने. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंफर्ट है बुल्स का एट द सपोर्ट जोन्स, और काफी अच्छी बाइंग है, क्विक बाइंग है. कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि बाइंग देखने को मिल रहा है. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट वी आर इन अ वेरी मैच्योर मार्केट. सो आज के स्टांस के लिए और नेक्स्ट वीक के स्टांस के लिए भी हम बाय ऑन डिक्लाइन ही कंटिन्यू करेंगे निफ्टी में, एंड वी आर लुकिंग एट 24,350 एज द इमीडिएट सपोर्ट जोन, एंड अपसाइड 24,650 और फिर 24,800 लेवल जो है वो हायर साइड पे है. बट रिमेंबर फ्रेंड्स, थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा. बायस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, बट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहेगा. मोमेंटम जो है वो थोड़े बहुत बैंक निफ्टी की वजह से डैम्पन हो रखा है, बिकॉज बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम द लास्ट 9 सेशंस. कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है. पिछले 3 दिन से तो काफी ज्यादा भी फॉल देखा हमने इसमें, बट ओवरऑल रिकवरी है एट द लोअर जोन्स, बट फॉलो अप मिसिंग है बैंक निफ्टी में. वी आर सीइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ऐसा चार्ट का डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हो कि आप निफ्टी में देखोगे तो देर इज वेरी स्विफ्ट बाइंग, स्मार्ट बाइंग है, नीचे के लेवल से बहुत क्विक बाइंग है. बट बैंक निफ्टी में
बाइंग है बट फॉलो अप नहीं है, और ये फॉलो अप नहीं होने के कारण जो है इट्स नॉट बीइंग एबल टू होल्ड एट हायर जोन्स। तो वहां जब टिक नहीं रहा है हायर जोन्स पे, तो वहां पे स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रैटेजी वाइज जा सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, कम एक्सपोजर लेके, कम रिस्क लेके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट क्लियरली यहाँ पे रेंज बाउंड स्टांस ही रहेगा बैंक निफ्टी में। सो लेवल्स अगर हम बात करें, 51,250 इज द इमीडिएट लेवल ऑन द अपसाइड, 51,500 एक हर्डल जोन भी है वहां पे, एक ऑप्शन डेटा के वाइज अगर हम देखें तो। एंड डाउन साइड में 50,250 विल बी अ सपोर्ट जो हमें देखना है, बट इट इज कंटिन्यूसली मेकिंग लोअर लोज। तो विच आप यहाँ पे देख भी पाओगे, ये कंटिन्यूसली लोअर लोज ही बन रहा है, यानी कि आज का जो लो है वो प्रीवियस लो से और नीचे है। सो ये जो ट्रेंड है, ये सीक्वेंस है पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। सो क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पे अटकता हुआ लग रहा है बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में यू कैन गो फॉर बाय ऑन डिक्लाइन, राइट। ओके, क्विकली हम कुछ सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। वी हैड डिस्कस्ड ऑयल एंड गैस यस्टरडे, तो वहाँ पे हमने ओएनजीसी, पेट्रोनेट ये सब डिस्कस किया था, तो उस पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ONGC is still higher, but थोड़े बहुत consolidate करे, but overall structure is quite positive, so one can continue being with this stock. Sector भी काफी अच्छा है। Petronet पे एक बार हम देख लेते हैं, because we discussed this also. Petronet is doing good, another 3% हम देख रहे हैं यहाँ पे up है stock. Entire oil and gas space is looking very lucrative, तो यहाँ पे ये stock भी आप hold कर सकते हो, ride कर सकते हो for the beg your pardon, for the session to come, right? फिर हमने कुछ ऑटो स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे। टाटा मोटर्स वाज वन। नाउ स्टॉक ओपनड गैप अप, वहाँ पे एक जो टारगेट था हमारा वो भी अचीव होते हुए दिखा, बट नाउ देयर इज सम प्रॉफिट बुकिंग, बट स्टिल हमारे लेवल से ऊपर ही है। So one can do the profit booking at these levels, और आज के जो fresh momentum वाले stocks है उस पे हम focus कर सकते हैं। So today my focus is on Ashok Leyland। यहाँ पे ये stock जो है वो काफी positive लग रहा है, fresh breakout है इसमें, and stock is now come out of its consolidation of the last 12 sessions। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक निकलता है तो टेंडेंसी होता है कि लॉन्गर द कंसोलिडेशन, लॉन्गर द अपसाइड और डाउनसाइड, जहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इन दिस केस वी आर एक्सपेक्टिंग कि सस्टेन होगा ये बाइंग इंटरेस्ट एट द हायर जोन्स। सो अशोक लेलैंड इज वन कॉल दैट वी कैन लुक आउट फॉर फॉर द नेक्स्ट अप मूव। तो यहाँ पे आप टारगेट बना सकते हो immediately, 250 is what we are looking at। तो 250 के लिए हम यहाँ पे अशोक लेलैंड को देख सकते हैं 235 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दिस विल बी द कॉल फॉर टुडे। या ऑफ कोर्स टुडे सेंसेक्स, थैंक यू मयूर। तो हम सेंसेक्स को रूल आउट नहीं कर सकते। सेंसेक्स ट्रेड करने के लिए हम काफी क्यूज जो है वो निफ्टी से ले सकते हैं, सॉरी निफ्टी से ले सकते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी पिछले 2 दिन से काफी अच्छा बाइंग है यहाँ पे। सो सेंसेक्स इज ऑल्सो विटनेसिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट ओवर हियर। क्यों हम निफ्टी से क्यूज ले सकते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स इन देयर वेटेज, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर सिमिलर। जैसे आप देखोगे कि हेवी वेट्स में रिलायंस है, कुछ जो सॉरी कुछ ऑटो स्टॉक्स है जिनका वेटेज काफी सिमिलर है सेंसेक्स और निफ्टी में, इसलिए हम निफ्टी को देख के सेंसेक्स को गॉज कर सकते हैं। बट सेंसेक्स इज मोर वॉलेटाइल देन निफ्टी, तो इसके अगर आप ऑप्शन ट्रेड्स कर रहे हो, ऑप्शन प्रीमियम बहुत स्विंग्स होते रहते हैं, सो प्लीज ट्रेड केयरफुली विथ योर स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली, राइट। So any यहाँ पे particular strike to watch for, Shivangi? for Sensex? Yes, yes, for Sensex. Okay, so we are actually मैं आपको स्ट्राइक बता देती हूँ। वी आर एसेंशियली ऑन द बाय ऑन डिक्लाइन साइड ओनली, एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग एट राउंड अबाउट 80,500 का कॉल हम देख रहे हैं। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग नियर 130-135 लेवल्स।
तो हम इसको देख रहे हैं विद सपोर्ट ऑफ 110, 110 का सपोर्ट है, and upside we can expect 200 levels over here. So 110 support रहेगा आपका, and immediately okay, for Sensex what happens usually is काफी swings आते हैं, right? तो आप you can keep booking, keep churning. जैसे आपको अगर 20 पॉइंट मिल गया तो आप 20 पॉइंट बुक करके वापस आप लोअर जोन्स पे लेके चर्न करते रह सकते हो. दिस इज द करेक्ट वे टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, ताकि आपका एक्सपोजर बड़ा नहीं हो, आप प्रॉफिट्स बुक करते रहो, खाली नोशनली स्क्रीन पे ना देखो, and you are being able to understand the market movement also. So we can look at 80,500 call, right? बाकी हीरो जीरो के लिए हमारा जो आफ्टरनून सेशन होगा, that in that session we'll discuss in length जो हीरो जीरो है. Okay. Yes, मयूर जी, 150 नहीं, टारगेट आप कर सकते हो 180 और फिर 200. तो this is how you can slab. Okay. Sorry. So, Parth, can we take a little bit of Sure, questions? sure. So I think Sushma ji is one of our, very old members, and she has been asking a query since a couple of days. So if we Yeah. can take up a query on data patterns and oro pharma. Okay. Data patterns. Overall, sector तो positive है, but this stock is not really, gaining momentum. Long-term investor हो तो कोई problem नहीं है, but if you're a trader, I would say that momentum missing है, तो आप exit कर लो, profit book कर लो अगर आपका लिया हुआ है, क्योंकि कल का एक अच्छा खासा move हमने देखा. But this stock has a tendency कि जब अच्छा खासा move यहाँ आता है, उसके बाद थोड़ा बहुत profit taking आता है. अगर आप देखो यहाँ पे भी, and then here also, here also. So this stock has a nature of with booking profits very quickly. So profit book कर लो अगर आप trader हो, investor हो तो बने रहो. And the other stock, sorry. Yeah, this stock was oro pharma. Okay. Pharma में भी बहुत अच्छा action है, momentum है, and looking at Oro Pharma. ओके, औरो फार्मा को देख के लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक काफी टाइम से, एंड स्टॉक हैज बीन मूविंग इन अ अपवर्ड स्लोपिंग चैनल, बट मोमेंटम इज मिसिंग. अगर आप फार्मा के साथ जाना चाहते हो, I would suggest you can be with some of the stronger names. Sun Pharma is quite positive, and yeah, I think Sun Pharma is a better pharma pick than the other lot. मैं एक बार granules भी check कर लेती हूँ. Granules is actually looking very nice. So one can look for this stock. आप Sun Pharma मत देखो, granules देख लो. Okay. Yeah. And ma'am, I think LIC was our BTST pick for yesterday. So if you can have an update on Yes. LIC हम देख रहे हैं कि stock is trading flat. यहाँ पे कुछ ऊपर खुला था, पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था, बट नाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग. तो हम जो है बाइंग प्राइस को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं, एंड देन वी कैन अकॉर्डिंगली होल्ड द पोजीशन. Okay. And ma'am, since IT stocks are in focus, Nikita has a query on Infosys. Okay. So IT stocks have been the one space or sector you can call which have driven the entire index in this last 2-3 weeks. क्योंकि बैंक निफ्टी तो परफॉर्म किया नहीं, अभी कुछ सेक्टर्स को तो सपोर्ट करने पड़ेंगे. तो यहाँ आईटी फोरफ्रंट में आया था, लुकिंग वेरी पॉजिटिव, एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग एट सम ऑफ द मिड कैप आईटी नेम्स आल्सो जो काफी अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ हैवी वेट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं. इनफैक्ट अगर हम मंथली देखें तो पिछले महीने, इस महीने में ही स्टॉक इज अप बाय 19-20%. So stock is quite positive, has started moving after a long consolidation. So one can continue being here. Positionally 2000 के targets यहाँ पे बनेंगे. We also have a query on another IT name, Tata Elxsi. So looking at Tata Elxsi, this stock has somewhat been in some sort of profit taking या consolidative move पे रहा है. So I would suggest be with the stronger names in IT pack.
हम स्ट्रेंथ के साथ प्ले आउट करेंगे तभी हम मैक्सिमम गेन्स कैप्चर कर पाएंगे. So I would suggest avoid this stock once, and you can look for better stocks like Infosys for that matter. Okay. I think कल मधुर सर ने IFCI भी recommend किया था, and our members have a query on that. Okay, we'll just quickly look at IFCI also. Uh, IFCI is positive on the long term. अगर हम इसका long term structure देखें तो काफी positive है. Today also stock is respecting its support zones. Previous जो low था उसका भी respect कर रहा है. Stock is at lifetime high levels, तो of course थोड़ी बहुत profit taking होगी. But good part is that it's holding at the higher zones. काफी एक steep decline नहीं है, profit taking नहीं है, तो hold करते रह सकते हैं. One can look for an upside of around 90, जो इसका immediate high है 91 के आसपास, और फिर 95 तक हम इसको expect कर सकते हैं. But put a stop loss of 82. Sure, ma'am. And you spoke about oil companies yesterday, and Ayush has a query on BPCL. Yes. So oil पे हमने आज सुबह भी एक रेट दिया था, but BPCL देख लेते हैं. So oil, again, Ayush, I would like to tell you that हमेशा कोई भी sector अगर हम देख रहे हैं, of course it's important to be with the stronger momentum वाले sector, but within the sector also you need to have like a certain criteria कि आप strength वाले counter के साथ ही रहो. Now if you look at Petronet for that matter, तो यहाँ पे ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस में, और आई थिंक दिस इज व्हाट यू शुड लुक आउट फॉर, क्योंकि जो स्टॉक्स में हायर डिमांड रहता है वही आगे ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रखता है. So instead of BPCL, I think one can consider Petronet for a quick up move, but BPCL का भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड. Okay. And ma'am, I think telecom stocks भी काफी फोकस में रहे हैं. So we have a query on MTNL and HFCL. टेलीकॉम बोलते ही मुझे भारती एयरटेल का ही याद आता है, because this stock has consistently made money for a lot of traders, investors. काफी strong counter है, और इस स्टॉक का एक काफी अच्छा चीज है कि ये क्लियर एंट्री एग्जिट सिग्नल दे देता है. अगर ये मैंने अपना 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन प्लॉट किया है यहाँ पे, दिस इज अ ब्लू लाइन, you must be seeing exactly 50 exponential moving average के पास आके वापस ये retrace करता है, turn करता है वापस. So right now also somewhat like this has happened, वापस यहाँ पे support लेके अब तैयार हो रहा है up move के लिए. So beautiful structure of this chart, but yes, queries जो था वो I think RVNL पे था, नहीं sorry, MTNL पे था. कौन से stock पे था? MTNL. MTNL पे था. So let's look at MTNL. Okay, this has comparatively lower volumes, तो आप काफी गैप अप है यहाँ पे, इंडिकेट करे कि बहुत कम वॉल्यूम्स यहाँ पे है, और if you've done your research, आप बने रह सकते हो according to your research, but I would suggest, I think, make your stop losses very much handy, ट्रेल करते रहो आगे की तरफ, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे स्टॉक्स में जहां बहुत एक स्टीप वी शेप रिकवरी आती है, तो वहां पे स्टीप डिक्लाइन भी आता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू कीप योर स्टॉप लॉस इन हैंड. बाकी आई थिंक वी डिस्कस भारती एयरटेल, वो बेटर है इस पूरे स्पेस में. Right. And ma'am, when you spoke about Petronet LNG, I think the second stock that comes to mind is GAIL. So if we can have a view on that as well. गेल, इज दैट राइट? Yes, GAIL. ओके ओके. तो गेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो वी हैव सीन दैट द स्टॉक इज वेरी वॉलेटाइल, काफी स्विंग्स होते हैं स्टॉक में. तो इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो इंट्राडे ही अपना एग्जिट के पोजीशंस जो है वो प्लान कर ले, बिकॉज टेंडेंसी इस स्टॉक का काफी स्विंग्स में रहने का है. So for intraday, one can look out for 240 levels आज के लिए, and support आप आज का लो का ही बना सकते हो, which is round about 290 229. तो इसको ही आप ले सकते हो as a make or break zone.
And we also have one stock options query. Nilesh has bought BPCL 310 put at 7 rupees. Okay, so हम पूरे पेट्रोनेट सॉरी हम पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में पॉजिटिव है, बट बीपीसीएल इज नॉट परफॉर्मिंग, इट्स कंसोलिडेटिंग, बट हमारा व्यू जो है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ही है फॉर द एंटायर स्पेस. सेक्टर पॉजिटिव है, तो जब सेक्टर पॉजिटिव है, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का पुट खरीद रहे हो तो वो बहुत जान निकल जाएगी वो पुट को भरने में, because the overall जो parent है, like the sector in total, वो strong है, तो वो ज्यादा जल्दी से गिरने नहीं देगा स्टॉक को. So I would suggest अगर आपने पुट लिया हुआ है तो आप of course आज आप थोड़े प्रॉफिट्स में होगे because the stock is little down by around about 1%, but मैं आपको suggest करूंगी कि you plan your intraday exit. Right. The next query is on IEX. I think वो stock भी काफी momentum में रहा है. So many retail guys have entered this. Okay. So IEX is the long term story जो है, structure जो है इसका काफी positive है, and this stock has been a multi bagger since inception. इसका काफी अच्छा returns इसने दिया है. थोड़े बहुत profit booking जरूर हमने last 2 हफ्तों से देखा है, but now stock is again recovering. So 190 200 के positional levels के लिए हम hold कर सकते हैं, but this will take a little bit of a patience. And next we have a fundamental query on which sectors will outperform in the next 6 months. Okay, so अगर हम sector thematic, if we are talking about, then auto is definitely one space which cannot be ruled out. काफी positive रहा है, and this stock market is such that it rewards the strength. So auto is one space which is looking very positive. Auto में भी अगर आप specifically देखो तो two wheeler space, tractor space, जो कि हमने कल discuss भी किया था कि this time budget is mainly focused on the deployment of funds towards the rural agricultural theme. तो वहाँ पे टू व्हीलर स्पेस एंड ट्रैक्टर वाले कंपनी जो है वो बहुत पॉजिटिव लगेंगे फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें. Then there is some of the telecom space like Bharti Airtel is looking very nice. But of course, आप अपना risk reward देख के ही आप invest diversify करके करना. And then next up is some selective. You can look at some of the utilities name, consumption names पे आप देख सकते हो. Like ITC is quite positive, and इसमें से और भी नाम है Tata Consumer. These stocks are very good and looking positive. So important है कि आप diversify करके ही अपना investment करो so that your risk is minimized, and one can also look for some of the IT names. Sure, ma'am. And speaking about Tata Group, we also have a query on Tata Tech. I think IPO के बाद उसमें कोई ज्यादा मोमेंटम देखा नहीं है, so काफी लोग उसमें फंसे पड़े हैं. Okay, so yes, Tata Tech has kind of given up from the IPO levels. 1200-1400 के आसपास था, and now the stock is down by a good 400 points. But यहाँ पे अगर हम parent company को देखें तो कोई problem नहीं है, देखिए, because it's the chart structure is so limited. आप अगर अब इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी देखो तो ज्यादा डेटा है नहीं, बस हमारे पास 6-7 महीनों का डेटा है. सो टेक्निकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, तो ट्रेडिंग तो आप मत ही करो. पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पेरेंट कंपनी इज नाइस. यू कैन जस्ट काइंड ऑफ just keep it for a long term. You can give it another 6-7 months time if you have the patience. और आप फिर इसका देख सकते हो, because looking at IPOs it's very important कि आप parent company का nature देखो कि वो कैसा, वो उनके stocks जो है वो कैसा किए हैं, या how is the numbers of those stocks. So उस हिसाब से अगर हम बात करें, so this will be my view. Okay. And ma'am, since we are nearing the end of the session, if you can also give an update on the Sensex call that we shared. Yes. So Sensex, we've been tracking 80,500 call.
तो अभी अराउंड 140 चल रहा है, ये बीच में 155 तक भी गया था, बट राउंड अबाउट अभी 140 के आसपास ही है. सो गाइस कीप चर्निंग द कॉल. आप वेट मत करते रहना टारगेट्स का, बिकॉज सेंसेक्स में स्विंग्स बहुत ह्यूज आते हैं. So 110 is support and upside 160, 180, 200 जो भी आपको swing मिले आप उसको book करते रहना. And if you want to take less risk or less exposure, so one can also go for a bull call spread by buying 80,500 and selling 80,600. तो ये जो पूरा spread है वो round about आपको 30 points में बैठेगा, and with a risk of 30 points you're getting a maximum reward of 70 points. तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज्ड है, रिवॉर्ड है वो भी कैप्ड है. So both the factors are in control. But जो है आप market setup भी देखना. Right now it's quite positive और market is doing well. So we'll play with the call side only. And बात करते करते ये call 150 हो चुका है अभी, right? तो इसी तरह आप 20-20 पॉइंट का swing play करो. You'll be able to make good capture good points movement throughout the day. Sure. So I think at the start of the session, Mayurji mentioned that this is your opportunity to become a Sensex queen as well, and probably you are standing true to that name now. So guys, we have made a profit around 15 to 20 points in Sensex options as well. So keep churning, as ma'am said. We'll take a couple of more stock queries before we end this session. So the next query we have is on NHPC. NHPC, okay. Well, the stock has now negated after falling. यही बात है कि ऐसे स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में बहुत स्विफ्ट रिकवरी भी आ रहा है, बट ओवरऑल इसका व्यू जो है अब कंसोलिडेटिव का रहेगा. सो इफ यू आर अ ट्रेडर, आई वुड सजेस्ट कि आप 110 115 के आसपास अपना जो है एग्जिट पॉइंट्स प्लान कर सकते हो, एंड 100 वुड बी अ सपोर्ट. Okay. And ma'am, any fresh entry for PCBL? PCBL is a stock which has moved, but यहाँ पे हमने देखा है कि there was a inverted HNS pattern over here, but उसका जो breakout निकलने के बाद momentum नहीं था, fresh buying नहीं थी. So even though the stock is in momentum today, right now it's up by 2.5%, 3%. But इसमें क्या होता है, tendency of the stock is that momentum काफी lose हो जाता है. So 300 के ऊपर अगर होल्ड करता है तब आप फ्रेश बाइंग की तरफ जाओ, वरना I would say you can avoid, because then you'll get stuck in a range bound move. Sure. So I think guys, we have taken all the stock queries for today, and thank you so much Shivangi ma'am for a profitable morning. कल मधुर सर ने हमारा मॉर्निंग प्रॉफिटेबल बना दिया था टाटा मोटर्स के साथ, आज आपने सेंसेक्स के साथ हमारा मॉर्निंग प्रॉफिटेबल बना दिया. So thank you once again ma'am for your time, and thank you everyone for joining in. Please join us at 2:30 p.m. for the Sensex expiry session. So that's it from our end, guys. Any closing comments, Shivangi ma'am? Thank you so much, Parth, and thank you so much for all the people who've joined. And we'll Sensex के साथ मेरा एक ही advice रहेगा कि swings बहुत रहते हैं guys, so please trade with your risk and reward in hand. और of course it's the last day of the week, so weekend enjoy करिएगा, बारिश का मजा लीजिएगा, and see you back next week. So ma'am, by the way, while we're talking, Sensex has already hit its target. काफी अच्छा मूव देखने को मिला है सेंसेक्स में. So our calls have hit the target. Okay, the call is now 190. Yes. Okay, yes. So targets हमारा achieve होते हैं. Okay, the call is now 210. Lovely. So guys, let's have a thank you Shivangi ma'am in the chat box. 210 का targets हो गया है अब जो. Thank you so much guys. काफी मैसेज आ रहे हैं कि 230 तक हिट हो गया है. Thank you मधु जी, thank you मयूर, भुवन, thank you guys, Sanjay, Priyanshu, everybody. Okay, thank you so much. काफी आप लोगों ने
ओके किसी ने लिखा है वीकेंड का अच्छा स्टार्ट हो गया यस ओके थैंक यू सो मच मधु जी So, guys, that's it. And do join us at 2:30 p.m. for the Sensex expiry. See you, everyone. Thank you.